Welcome to all in my YouTube channel. Today I am going to discuss about the very important topic from Mathematics 1. So here I am discussing theoretical part as well as numericals which are useful for the first year engineering students. So without wasting time, I am starting the session. So in this session, I am taking part introduction, then types of matrices, characteristics equation, eigenvector, and problems based on the above. Then we'll see about the Cayley-Hamilton theorem, then diagonalization of matrices, then reduction of matrix to diagonal form, then orthogonal transformation of symmetric matrix to diagonal form, then quadratic form, then nature, signature, index of this quadratic form, then reduction of quadratic form to canonical form, then index and signature of the quadratic form, linear transformation of quadratic form, then reduction of quadratic form to canonical form by orthogonal transformation. Then part 1, matrices. So first we'll see define the matrices. What is meant by matrices? So matrices is defined as a rectangular array. It is type of array-like arrangement. It's arrangement of column and rows of scalar subset to certain rules of operation. Means suppose if you have m and n numbers, they are real or complex. Maybe real number may be complex number, and they arranged as an array, rectangular array, in row wise and column wise. Then the figure which we form is called as the matrices of m by n order, that is m rows, n columns. So here see, so this is the matrices. This is called the matrices. Here a11, a12, a13, a up to 1n, these are the first row and n number of columns. So row 1, n column, and a11, a21, a231, these are the columns. So these are called as the elements of matrices. These are called as the elements of matrices. The horizontal is called as the row and vertical is called as the column. So count how order of matrix. So order of matrix is m by n, that is the m rows. First always we are writing rows, counting number of rows, and then counting number of columns. So this is the order of matrix. So matrix is always denoted by capital letters A, B, C, and it is shown as like in figure. So here we can write a m by n matrix. This is the equation of matrix. This is the equation of matrix. So you see, this is the mathematics. We are studying mathematics, so we always require an equation. So A is the matrix written as a small a ij, where I is equal to 1 to m and j is equal to 1 to n, because I row and j is in column. So C, always C, I means row, j means column, and number of rows are m, number of columns are n. So m by n order. So now, simultaneous equation, whenever we need to solve matrix, we need to form the equation that we'll see later. So here symbolically ये इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये इक्वेशन हमें दिया है, इक्वेशन दिया है हमें a11 x1, a12 x2, a13 x3,
is equal to b1, a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 is equal to b2, a31 x1 plus a32 x2 plus a33 x3 is equal to b3. So symbolically हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हमें ax is equal to b, a नॉर्मल मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स ऑफ x1 x2 x3. These are the variables, matrix of variables. And first is the normal matrix, matrix of real numbers or complex numbers, or and B is also matrix, but it is the matrix of constants, or we can say it is the matrix of numbers or anything which given after equal to sign in this equation. This is the b1 b2 matrix, b matrix. This is x1 x2 x3. This is the variable matrix. Now types of matrices. First is the real matrix. A matrix is said to be real if all elements are real numbers. All elements are real numbers, as you know, real number. So matrix is real matrix. Then square matrix. Square matrix and rectangular matrix. Square matrix means m is equal to n, means number of rows equal to number of columns. And rectangular matrix, number of rows is not equal to number of columns. Then square matrix, n rows and n column is called n rowed square matrix. N rowed square matrix. When is a 3-row square matrix, the elements a11, a22 and 33 of a matrix are called its diagonal elements. So these elements are called as the diagonal elements, and the diagonal along these elements are called principal or leading diagonal. These elements are called as the diagonal element, and this diagonal is called as the principal or leading diagonal. Then the sum of the diagonal element of a square matrix is called trace or spur. The sum of diagonal elements of square matrix is called as the trace or spur. Then row matrix. A matrix having only one row and any number of columns. And one row. So this is the example, row matrix. Row matrix is only one row and n number of columns. So these are the columns, vertical column, and this is the row. So its order is 1 by n because n number of rows, n number of columns and only one row. Then column matrix, only one column, number of rows. So its order is m by 1. M by 1 is the order. Then null matrix. Null matrix is the matrix of 0. Matrix of 0. Null matrix. Elements. All the elements are 0. So with any order. With m by n order. Then now submatrix. A matrix obtained from a given matrix A by deleting some of its rows. Some of its rows or column or both is called submatrix. So we can obtain a matrix
from given matrix by deleting its sum of rows and its sum column. If we delete it, whatever matrix we get is called as a sum of submatrix. So see example 3014. So 0 minus 1 2 0 3 5 0 2 1 6 4 1. This is submatrix we can call it. So we perform row or column operations. Then diagonal matrix. Diagonal matrix, all other elements other than diagonal elements are 0. The matrix for which other element than the diagonal element are 0. Only diagonal elements have values. This is called as the diagonal matrix. So see the example. So scalar matrix. A diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal to a scalar, say K, is called a scalar matrix. All the diagonal elements are same with scalar. It's a scalar. As you know, scalar and vector, concept. So scalar. Then unit matrix or identity matrix. A scalar matrix in which each diagonal element is 1 is called a unit or identity matrix. It is denoted by I. Scalar matrix, it's a scalar matrix, but its diagonal elements are 1. That is unit. So that's why it is unit matrix and it is denoted by I. Then upper triangular matrix. Upper triangular matrix. If this is the example of upper triangular matrix. See, this is square matrix. The elements below the diagonal are 0. If the element of matrix are 0 below the diagonal, this is diagonal elements, and the below elements are 0. Other elements with any value it doesn't affect, but only these elements are 0. Then this is called as upper triangular matrix. Then lower triangular matrix. For lower triangular matrix, these elements are 0. The elements which are above the diagonal are 0. Other element with any value it doesn't affect, but if upper elements are 0, then it is called as the lower triangular matrix. See, this is the vice versa concept. अगर ऊपर के एलिमेंट 0 है डायगोनल के ऊपर के, तो इट इज लोअर ट्रायंगुलर, और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 है तो इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. देन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज आइदर अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर. Single element matrix is only single element. So this is the example, only single element. This is the single element matrix. Then equal matrices. Two matrices A and B are said to be equal if they have the same order and their corresponding elements are equal. A is the matrix Aij, M by n order, B ij, its order is P and Q. Then A is equal to B if M is equal to P and N is equal to Q. Means number of rows from column matrix A equal to number of rows from matrix B. Number of columns from matrix A is equal to number of columns from matrix B. And then
aij is equal to bij for all I and j. मीन्स ऑर्डर भी सेम चाहिए और उसके एलिमेंट भी सेम चाहिए, तो उसे इक्वल मैट्रिसेस। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। Singular and non-singular matrix. The square matrix A is said to be singular if, ऐसे साइन में हम जब मैट्रिक्स लिखते हैं उससे बोलते हैं डिटर्मिनेंट, इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A is 0, then matrix is singular. And if determinant of matrix is not 0, then it is called as the non-singular matrix. So how to calculate determinant? That we'll see. So characteristics equation. तो हम जब डिटर्मिनेंट निकालते किसी मैट्रिक्स या एक मैट्रिक्स सॉल्व करते तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लगता है। इफ A is any square matrix of order n, that is m by n, we can form the matrix A minus lambda, where I is the nth order unit matrix. So हमें क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करने पहले हम देखते कैसे फॉर्म करते हैं। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से एक हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेना है, दैट इज लैम्बडा, कांस्टेंट लेना है, और वो कांस्टेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और उसे हमारे नॉर्मल मैट्रिक्स से माइनस करना है। ए माइनस लैम्बडा है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस सिर्फ डायगोनल एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं और वो भी यूनिट होते हैं। तो हमें सिर्फ हमारा जो नॉर्मल मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है उस डायगोनल एलिमेंट से सिर्फ लैम्बडा को माइनस करना है। एक हमारा वेरिएबल हमने एज्यूम किया है, तो उसे माइनस करने के बाद ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा A माइनस लैम्बडा। और इससे जो अगर ये मैट्रिक्स हमने सॉल्व कर दिया तो हमें ये इक्वेशंस मिल जाएगा। ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों निकालते? तो हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना है। और के आर द एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट aij. द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रूट और लेटेंट रूट्स और आइजेन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। सी यहाँ पे न्यू कंसेप्ट आ गया, आइजेन वैल्यूज। सो आइजेन वैल्यूज आर नथिंग बट दे आर द रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देन आइजेन वैल्यूज हमने निकाल दिया रूट, तो हमें आइजेन वेक्टर निकालने, तो उसके लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। तो आप ये थ्योरेटिकल पार्ट है, जब हम न्यूमेरिकल तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो पहले कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन y is equal to ax, consider this as one equation 1, then which transform the column vector x into the column vector y. We often require to find those vectors x which transform into scalar multiple of themselves. Let x be such a vector which transforms into lambda x by transformation. So यहाँ पे क्या करना है हमें? y is equal to x, x को स्केलर और y को
आइडेंटिटी में ट्रांसफर करना है। y is equal to lambda x from equation 1 and 2 क्या हो गया, ax is equal to lambda x, ax minus lambda I into x equal to 0, a minus lambda I into x equal to 0। सो हमारा इक्वेशन ऐसे बन जाएगा। ये सारे हमारे इक्वेशंस ऐसे बन जाएंगे। दिस मैट्रिक्स इक्वेशन गिव्स एन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। दीज आर द लीनियर इक्वेशन। अगर हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें x1, x2, xn की वैल्यूज मिल जाएगी। This equation will have non-trivial solution only if the coefficient matrix A minus lambda I is singular। हमने देखा है सिंगुलर मैट्रिक्स। So corresponding to each root of equation 5, equation 5 हमने लैम्बडा के रूट्स निकाल दिए, दैट इज आइजेन वैल्यूज निकाल दिए। आइजेन वैल्यू, ईच आइजेन वैल्यू एक करस्पॉन्डिंग आइजेन वेक्टर्स हम कैलकुलेट करेंगे। उसमें 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, तो आगे आएंगे इसमें। सो करस्पॉन्डिंग टू ईच रो ऑफ इक्वेशन 5 द होमोजेनियस सिस्टम हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द आइजेन वेक्टर और लेटेंट वेक्टर। नाउ अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा आइजेन वैल्यूज क्या होती है और आइजेन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आइजेन वैल्यू इज द सम ऑफ आइजेन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। आइजेन वैल्यू जो आते हैं हम चेक कैसे कर सकते हैं, तो उनकी जो सम होती है, एडिशन, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल मैट्रिक्स। सो हमारा पहला मैट्रिक्स है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट है उसकी सम, डायगोनल एलिमेंट्स की सम और आइजेन वैल्यूज की सम एक ही आएगी। द प्रोडक्ट ऑफ आइजेन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट। द प्रोडक्ट ऑफ आइजेन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। इफ लैम्बडा is an eigenvalue of a matrix A, then 1 by lambda is the eigenvalue of A inverse। तो ये कंसेप्ट आपको पता रहेंगे। मैंने पहले एक वीडियो बनाया, उसमें डिटर्मिनेंट कैसे निकालते वो मैंने बताया है, और इनवर्स के मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज के बारे में भी एक वीडियो बनाए, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन इफ लैम्बडा इज एन आइजेनवैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, then 1 by lambda is also its eigenvalue। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है वो भी मैंने उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बता दी। इन प्रॉपर्टी 1, if lambda 1, lambda 2, lambda n are the eigenvalues of A, then lambda 1 k lambda 1 k lambda 2 k into lambda n are the eigenvalues of the matrix AA, where k is a non-zero scale. Then 1 by lambda 1, 1 by lambda 2, 1 by lambda n are the eigenvalues of the inverse matrix। Inverse matrix ऐसे लिखते हैं हम लोग A inverse। lambda 1 raised to p, lambda 2 raised to p, up to lambda n raised to p are eigenvalues of matrix A raised to p, where p is an any positive integer, any positive integer। Then prove, let lambda r be an eigenvalue of A and xr is the corresponding eigenvector. Then by definition, A into lambda xr is equal to lambda r into xr, multiplying both sides by k scalar।
Ka into xr is equal to K lambda r is equal to xr. Then K lambda r is an eigenvalue of Ka, and the corresponding eigenvector is the same as that of lambda r, namely xr eigenvector. So this is the problem. Then second property, then third property. Now theorem. A matrix A is a singular if and only if 0 is an eigenvalue of A. अगर A की eigenvalue 0 है तो ही वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है। तो हम अभी न्यूमेरिकल देखेंगे। This is the 3x3 matrix. This is the name of matrix A. These are the elements of matrix A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. These are the principal diagonal of matrix. Find the sum and product of eigenvalues of the matrix without finding eigenvalue. Eigenvalue find किए बिना eigenvalues की sum and product हमें निकालना है। तो कैसे निकालना है sum and product? तो हमने प्रॉपर्टीज देखे थे। So sum of eigenvalues of A is equal to sum of its diagonal elements. Diagonal elements क्या है उनके? -2, 1, 0. -2 plus 1 plus 0 is equal to -1. It is the eigenvalue. Sum of eigenvalue. Sum of eigenvalue and product of eigenvalue is nothing but determinant. So determinant कैसे निकालते हैं? तो मैंने बता दिया है। तो कैसे सम निकालते मैंने बता दिया है। तो this is the solution. The two eigenvalues of matrix are equal to 1 each. Find the third eigenvalue. दो eigenvalue पता है, third eigenvalue find करनी है। तो हमें क्या करना है? eigenvalue की sum क्या होते हैं? diagonal element 2, 3, 2 plus 3 plus 2, 2 plus 3 plus 2 is equal to 5. 1 plus 1 plus a is equal to a is equal to ये दो minus के 5. So third eigenvalue is 5. The product of two eigenvalues of matrix A is 16. Find the third eigenvalue. So theorem हम यूज कर सकते हैं कि solid. No way. Find the sum of eigenvalues of inverse of matrix. Use the property and solve the example. So इसके बाद हम लोग देखेंगे how to find the eigenvalues and eigenvectors of the matrix in the next lecture.